Now see, if the wages of 54 men for 36 days amount to rupees 72900, what will be the wages of 30 men and 50 boys for 32 days, supposing two men to do as much work as 5 days? So here M1 is 54 men, B1 is 36 days, and W1 72900. M2 is 30M plus 50 B, 30 men and 50 boys. D2, what will be the wages of 30 men and 50 boys for 32 days? So it is 32 days. And this W2 is to be find out. So look here. Here formula is M1 D1 W2 M2 D2 W2. So 54M 36D into W2, and this 30 men plus 50 boys into 32 into W1 is 72900. So now simple calculation is left. Here 54 men, 30 men plus 30 men plus 50 boys. It means conversion is required. And here 2 men is equal to 5 by 5 boys. 1 man is equal to 5 by 2 boys. Conversion is here required. So here 54 into 5 by 2b into 36d to W2, 30 into 5 by 2b, 50 boys, and this is 32d into 729 square LPG. Now 2 into 27, and here 2 15, बी बी मीन्स बॉयज को कॉमन लेंगे तो ये बी इससे कैंसिल होकर जाएगा, ये डी इससे कैंसिल हो गया. अब सिंपल कैलकुलेशन आपका बाकी है. So W2 is equal to 15 5 to 75 plus 51 25 into 32 into 729 into 100 over 27 into 5 into 36. Now simple calculations. It is your answer. So calculation 5 भी 25 हो गया, and 27 is square 729, so it is 27, and 9 4 जा 9 3 जा हो गए, and 4 8 जा. So now 25 into 8 into 3 into 7, 25 8 200 3 600 6. This is W2. So wages is 60,000 rupees. If 20 men build a wall 800 decimeter long, 10 decimeter high, and 54 centimeter thick in 14 days, working 8 hours a day, how thick a wall could 15 men build a 900 decimeter long, 15 decimeter high in 21 days, working 9 hours daily? So here, work will be estimated as a volume, because this wall has volume, length, breadth, and height. So M1 is 20 men. Okay. M1 is 20 men. B1 is 14 days given. And T1 is 8 hours. And W1 we will take in terms of the volume. So L1, B1, H1. And similarly, we can take M2. How thick M2 is 15 men. Never miss to write this MD hours. It is very, very helpful. And D2 is 21 days. थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं होगी, ये आपको एकदम as you become friendly, then direct write formula and plug in the values. T2 is 9 hours. And W2 भी आपका L2, B2 और H2 हो जाएगा. So now plug in values. 20 men. D1 is 14 days. T1 is 8 hours.
into W2, L2, B2, S2. So L2 is 900 decimeter, 15 decimeter high. Question, how thick? So suppose it is y centimeter thick, इक्वल टू ये आपका पूरा वॉल्यूम हो गया एल बी एच के फॉर्मेट में. देन हियर इट इज एम टू 15 में, डी टू 21 days, डी टू 9 hours, and W1 is this L1 B1 is 800 decimeter, then decimeter 54 centimeter. So M cancel, D cancel, hours cancel, decimeter cancel, decimeter cancel. So the only centimeter is left, means the value of y will come in centimeters. And now calculation is only here. So calculations के लिए this 10 to the 20 हो गया. This 900 ये हो गया, and this 8 see 100 हो गया. Okay, now 2. अच्छा okay. 7 2 जा 7 3 जा हो गया. This 100 and 100 cancel हो गया. And now see y is 15 into 3 और क्या बचा 54 centimeter. Over here it's 2 into 2 और किसका आया 15. तो कोई दिख नहीं रहा था आसानी से. 15 cancel. And now simply 2 to 4. So 2 27. 27 3 jar. 81 by 2 means 40.5 centimeter is our answer. So wall will be 40.5 centimeter thick. सो इट इज वेरी सिंपल. जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे तो ये आपको M1 T1 D1 का एक कंसेप्ट, ये फार्मूला समझ में आ जाएगा. तो ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है. डायरेक्टली यू विल प्लग इन द वैल्यूज और आपका काम बन जाएगा. If 44 laborers can do a piece of work in 15 days of 10 hours each, how many masons must be employed to do 3 by 4 more work in 7 days of 11 hours each? Supposing 3 masons are able to do the work of 5 laborers, it means 3 masons are equal to 5 laborers. This is important. It's 1 mason is equal to 5 by 3 laborers. अब सेम चीज बार बार हो रही है, आपको समझ में आना चाहिए कि फार्मूला हमारा किस तरीके से होता है. आपको बताइए M1 D1 T1 W2 M2 D2 W1, राइट. सो M1 इज 44 लेबर. फार्मूला आप धीरे धीरे आप डायरेक्ट लिख सकते हो. 44 लेबर M1 इंटू D1. ये ध्यान रखिए, यूनिट जरूर मैं लिखता हूँ और आप भी इसको ध्यान रखिएगा. इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल इन कैलकुलेशन. M1 D1 क्या लेंगे हम लोग 15 days. T1 लेंगे 10 hours. W2, how many meshes must be employed to do 3 by 4 more work? So if I take work W1 as a 1, then W2 will be 1 plus 3 by 4, यानी कि 7 by 4. So W2 is 7 by 4. W लिख दो, ध्यान रहेगा 7 by 4 work. M2, how many meshes in M2 is to be find out, right? D2 is 7 days. T2 is 11 hours. And W1 is 1 work. Now calculate. D cancel. आवर कैंसिल. ये वर्क था W लिख दिया था, कैंसिल हो गया. अब आप M2 को कैलकुलेट कर लीजिए. 11 4 जा एंड 7 से ये 7 कैंसिल हो गया.
और 4 से ये 4 कैंसिल हो गया. So M2 is coming this 15 into 10 और ये L. So 15, 10 और कुछ भी नहीं बचा है, इधर भी कुछ नहीं बचा है, कैलकुलेशन पे ध्यान रखें. So we are getting value of M2 in terms of a laborer. So 15 into 10L. आपको चाहिए क्वेश्चन में मैसेज, तो here it is given 1 mason is equal to 5 by 2L. यहाँ से आप समझ सकते हैं it is 3 by 5 masons. So simply convert 15 into 10 into 3 by 5 masons. So 5 3 is 3 into 3 9. M2 is 90 masons. This is your answer. If 38 men working 6 hours a day can do a piece of work in 12 days. Okay, so M1 is 38 men. अब डायरेक्ट करते हैं हम लोग. T1 6 hours, D1 12 days. Find in what time 57 men working 8 hours a day can do a piece of work twice as great. So W2 is 2 लेते हैं, 2 work. And W1 1 जाएगा. 57 men, 57 M working 8 hours do a piece of work twice as great. तो ये हो गया. Okay, D2 find करना है. And W1 is 1 work. W1 is 1 work, W2 twice as great था. अब यहां पर देखिए लिखा है सपोजिंग 2 men of the first set to do as much work in a 1 hour as 3 men of the second set do in a 1.5 hours. Okay, it means efficiency of man is different. So यहाँ पर m और m सेम नहीं लेना चाहिए, इसको m डैश कर देते हैं and it is m डबल डैश कर देते हैं और अब कन्वर्जन की जरूरत होगी, राइट. So it is given supposing 2 men of the first set do as much work in a 1 hour. वही फार्मूला, as much यानी W1 W2 सेम होगा, as second set के 3 men of the second set do in 1.5 hours और वर्क सेम. मीन्स फर्स्ट सेट के 2 आदमी, सेकंड सेट के 3 आदमी का एक कंपैरिजन दे रखा है. मीन्स 2 men from the first set do the same piece of work in a 1 hour and that work is done by the 3 men of the second set in 1.5 hours. Okay, our cancel. So here 1.5 you can write 3 by 2. So it means 1 m dash is equal to 3 3 is 9. This to 9 by 4 m double dash. Conversion हो जाएगा. So here it is 38 into m dash. We can write it 9 by 4 m double dash into 6 hours. Hours cancel कर लीजिए और अब ये आपका ये डब्ल्यू इससे कैंसिल हो जाएगा. 12d into 2 is equal to 57 m double dash into 8 into d. अब ये m double dash से कैंसिल हो गया and 4 3s are right. 19 2s are 38, 19 3s are 57. This 3 cancel and now here 2 into 6 into 2. Okay, 2 into 2 4, 4 2s are 8 and 2 3s are. So now d2 is equal to this 9 into 3 into d means 9 into 3d means 27 days. Okay, you got it. धीरे धीरे आप इसको जितना फार्मूले पे वर्क कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप इस फार्मूले के साथ अच्छे ढंग से की ट्यूनिंग सेट हो जाएगी और फिर आप इस फार्मूले को बड़े अलग अलग फॉर्मेट में ये फार्मूला यूज होगा, फिर आप आराम से काम कर सकते हैं. ठीक है. सो डू द प्रैक्टिस. आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि फर्स्ट पॉज द वीडियो एंड खुद करने की कोशिश करिए एंड देन सी दिस सॉल्यूशन. रिमेंबर दीज क्वेश्चंस आर with the objective to make you more comfortable with the concept class and then do the practice. एक्सरसाइजेस होंगी, टेस्ट होंगे, उनमें क्वेश्चंस को करिएगा और नेक्स्ट असाइनमेंट्स जो होंगे उनमें क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल हाई साइड पे होगा. तो अभी आप प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस जैसे कर रहे हैं तो सब चीजें और बड़ी इजी होती जाएंगी.
A man can walk 600 kilometers in 35 days, resting 9 hours each day. How long will he take to walk 375 kilometers if he rests for 10 hours each day and walk 1.5 times as fast as before? So look here. Here, work is estimated in terms of a distance. तो W1 और W2 क्या डिस्टेंस के फॉरवर्ड होगा. अ मैन तो मैन M1 की जगह आप वन मैन ले सकते हैं. एक सेम आदमी है जो पहले और दूसरे केस में वही एक आदमी दौड़ रहा है तो M1 इज 1M एंड M2 इज 1M, राइट. D1 35 days. ओके. रेस्टिंग 9 आवर्स ईच डे. तो आपको समझना चाहिए T1 की वैल्यू रेस्टिंग से नहीं 24 - 9 आवर्स से मतलब होगा. ध्यान नहीं देंगे तो बहुत लोग T1 की जगह 9 आवर्स लिख लेते हैं, पता नहीं क्यों. लिखना नहीं चाहिए क्योंकि रेस्ट का कोई सेंस नहीं होता. M2 सेम मैन है ना. D2 you are supposed to calculate, and T2 now you know it is 24 minus resting 10 hours. 10 आवर्स रेस्टिंग है तो यहां पर भी आपको इस तरीके से कर लेना चाहिए. रेस्ट का क्या मतलब हुआ. ठीक है. एंड वॉक 1.5 टाइम्स एज फास्ट एज बिफोर. मीन्स स्पीड जो है वो इंक्रीज हो गई है. उस सिनेरियो में टाइम क्या लगेगा, कितने डेज लगेंगे. सो लुक एट द फर्स्ट टाइम W1 you will take here work is in terms of a distance which is 600 kilometer, and W2 is here 375 kilometer, right. Now do one thing. First you work for the same speed. For same speed. So M1 is 1M. Okay. डायरेक्ट लिखें. सो इट इज 1M. इसकी आदत डाल दीजिएगा, हेल्प करेगा कि 35 days. This is 24 minus 9, 15 hours. And W2 you are going to take 375 kilometer. One same manner, 1M. D2 here you are finding, and T2 is 24 minus 10, 14 hours. And W1 is 600 kilometers. So this and this cancel. Hours cancel. Kilometer cancel. So T2 simply it is a 15. So 7 2s are 14, 7 5s. Okay. And this 5 120. Now D2 is this 15 375 D over 2 and 120. Okay. So calculation is okay. Which was 15 into 375 to 120. Okay. Now you calculated it for same speed. Means itne din लगेंगे आपको. But the question is about 1.5 times as fast. So it means time and days का जो relation है वो कैसा होगा. Time और speed का relation. If you run with faster speed than previous, so time will be lesser. Time will be lesser means inversely proportional relation है. तो स्पीड बढ़ गई है तो हमें क्या करना चाहिए, इस स्पीड के लिए इसको 1.5 से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है ना. जब भी इनवर्स प्रोपोर्शन होता है तो आप समझते हैं 1 अपॉन जैसे ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी तो आप कैसे लिखते हो ए इस तरह से लिखते हो. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है देन यू राइट दिस वे. तो यहां पर स्पीड मोर स्पीड होगी तो जो टाइम होगा जो डे होगा क्या होंगे, कम होंगे. यानी इनवर्स रिलेशन है. इसलिए सिंपली इस स्पीड के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपने सेम स्पीड के लिए कैलकुलेट करा था बट गिवन स्पीड के लिए क्या करना होगा, आपको 1.5 से डिवाइड कर देना. बस 1.5 से डिवाइड कर दिए. ये है बस ये ऐसे हो गया. ये 15 से 15 कैंसिल हो गया और फिर ये आपका आंसर आ गया 375/24 days. दिस इज योर आंसर. इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अगर हो जाता है तो हो जाएगा. ये 3 7 10 5 15 2400
3 8 जा, and this is 125. 125 by 8, अब ये नहीं कैंसिल होगा. So your answer is 125 by 8 days. Now see this question. If a company of 160 men in 6 days of 11 hours each can dig a trench of 230-meter long, 5.5-meter wide, 1.5-meter deep, in how many days of 8 hours each would 96 men dig a trench 220-meter long, 3.5-meter wide, and 1 meter deep, supposing the hardness of the ground in the former case is to that of the later as 5 is to 7, and that 4 men of the later company can do as much work as 5 of the former in the same time. Okay, so my sincere suggestion to all of you, आप वीडियो को पॉज करें और खुद करने की कोशिश करें और फिर इसके बाद सोल्यूशन देखेंगे. यहां पर डबल कन्वर्जन रिक्वायर है. एक तो क्या है, वर्क का जो हार्डनेस ऑफ द ग्राउंड का जो रेशियो दे रखा है वो इस तरीके से है कि W1 और W2 वर्क का रेशियो है 5:7, राइट. और दूसरी तरफ जो फर्स्ट ग्रुप है, यानी फर्स्ट कंपनी जो है, जो फॉर्मर कंपनी के मैन की जो स्ट्रेंथ है और लेटर कंपनी के मैन की स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट डिफरेंट है. तो डबल कन्वर्जन की जरूरत होगी. हम्म. यहाँ पे वर्क कैसा है कि 230 मीटर लॉन्ग, 5.5 मीटर वाइड, 1 मीटर डीप, मीन्स वर्क आपका वॉल्यूम के टर्म्स में एस्टिमेट किया जाएगा. ओके, तो आपको लेना चाहिए W1 इज इक्वल टू 5V1 एंड W2 इज इक्वल टू 7V2, क्योंकि हार्डनेस का जो यहाँ पे दे रखा है, सपोज द हार्डनेस ऑफ द ग्राउंड इन द फॉर्मर केस टू दैट ऑफ द लेटर एज 5:7. मतलब ये समझ लीजिए कि सपोज एक मिट्टी की जमीन है जिसपे गड्ढा खोदा जा रहा है और एक पथरीली जमीन है, रॉक सॉइल है, उस पे अगर आप एक ट्रेंच बना रहे हो और एक अर्थी सॉइल है उस पे ट्रेंच बना रहे हो, तो दोनों को अलग अलग तरीके से एस्टिमेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ जितना काम होगा अर्थी सॉइल में उतने ही टाइम में रॉक सॉइल में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि हार्डनेस का मैटर आएगा. तो इसलिए W1 W2 का जो रेशियो है 5:7. सो W1 यू विल टेक 5V1 एंड W2 7V2. एक तो ये हो गया. दूसरा गिवन है कि 4 men ऑफ द लेटर कंपनी. सो अगर फर्स्ट कंपनी के मैन को हम लोग M डैश ले लें और सेकेंड कंपनी के मैन को M डैश ले लें, तो गिवन है 4 men ऑफ द लेटर कंपनी, लेटर मीन्स 4M डैश डू एज मच वर्क एज ए 5 ऑफ द फॉर्मर. इट इज एक कन्वर्जन आपका ये काम करेगा. अंडरस्टैंड? सो दो कन्वर्जन की जरूरत है यहाँ पे. सो फ्रॉम दिस यू कैन से इट इज 5, यहाँ पे लिख लेते हैं जगह के लिए, 5M डैश इज इक्वल टू 4M डबल डैश. और अब आप जो इतनी देर से प्रैक्टिस कर रहे हो फार्मूले की, आप डायरेक्ट वैल्यू प्लग इन करने की पोजीशन में होगे, राइट. सो 160 क्या ले लें, M डैश इंटू D1 क्या ले लें, 6 days, एंड T1 इज 11 hours, इंटू W2 इट इज 7, एंड V2 क्या हो जाएगा, V2 हो गया 96 men dig 220 meter. So it is a 220 meter long, 3.5 meter wide, and 1 meter deep. Okay, into M1, T1, T1, W2. Then M2 is 96 men. अब ये 96 men दूसरी कंपनी के हैं, इसको क्या लेना पड़ेगा, M डबल डैश into D2. D2 is D2, how many days D2 फाइंड करना है आपको, and they are working 8 hours each, so T2 is 8 hours, and W1 is 5V1, and V1 is here 230 meter, 5.5 meter wide, into 1.5 meter deep. Okay, so this is M2, D2, T2, W1. अब कैलकुलेशन में कन्वर्जन की जरूरत यहां से पड़ेगी. 5 dash is equal to 4M dash, so you know it is 1M dash equal to 4 by 5M double dash. Okay,
तो इससे हम चीजों को कन्वर्ट कर लेंगे। एम डैश यानी कि 1 m डैश इज टू 4/5, तो यहाँ पर मैं इसको 4/5 करके इसको एम डबल डैश कर देता हूँ। और अब चीजें इस आसानी से हो जाएंगी, तो एम डबल डैश और ये एम डबल डैश कैंसिल हो गया। दिस डी तो निकाला ही है मेरे को, ये आवर से आवर कैंसिल हो गया, एंड मीटर 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 ये कैंसिल हो गया। अब आप क्वेश्चन को कैलकुलेट कर, केवल कैलकुलेशन रह गया है, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए, ये 16 10 एंड 16 6, और ये 6 और ये 6 कैंसिल। देन 3.5 को मैं लिखना चाहूंगा 7/2, और हियर 8 इस 2 से, इस 5.5 को आप लिख सकते हो 11/2, और इस 1.5 को लिख सकते हो 3/2। ओके, दिस 2 2 4 4 2 8 कैलकुलेशन रह गया, ये आपको खुद करना चाहिए। और इस 11 से ये 11 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब बस D2 चाहिए, वो मैं यहाँ देख लेता हूँ, ये थोड़ा सा होल नंबर में आंसर तो आने से रहा। तो क्या है, 4/5, इसको तो ऐसे कर दो यार। तो ये हो गया, कैलकुलेशन आपको अपने एंड पे करना है। तो ये हो गया 4 × 2, 4 × 2, एंड ये D तो है, ये 7, और ये 220 अपॉन ये 2 है। इससे आप इसको 110 कर लोगे। ये बस कैलकुलेशन ना आप खुद करिएगा। 7 अपॉन ये 5, 230 एंड 3, 230 एंड सो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा होल नंबर में नहीं आएगा, जो भी है इस तरीके से। इससे ये कैंसिल हो गया, तो अभी ये 11 हो, 4 2 8, 8 7 7 या 49 इंटू 11 में फालतू का काम कर रहा हूँ, ये आपको करना है, क्योंकि ये 2 5 या 10, 23 6 9, कुछ भी कैंसिल होगा, ये ऊट पड़ा नंबर है। एनीवे, सो दिस इज योर आंसर. So objective of this question is to simply give you a approach. डबल कन्वर्जन यहाँ पे जरूरत है। इन नेक्स्ट असाइनमेंट्स एंड नेक्स्ट वीडियो हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस रखेंगे जिनमें कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा हो जाएगी। तो ये जो 10 क्वेश्चन आपको मैंने कराए, ये फार्मूले M1 D1 T1 D2, M1 D1 T1 W2 = M2 D2 T2 W1 के लिए थे, उसमें वैल्यू प्लग इन करने के लिए हर तरह के क्वेश्चन कराए। अगर आप ध्यान से देख रहे थे, या इसको बार बार पॉज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस वीडियो को, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तो कंसेप्चुअली आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन। इन कंसेप्ट क्लास फर्स्ट आई डिस्कस्ड रेशियो, देन प्रोपोर्शन, देन वेरिएशन, देन आई टुक क्वेश्चंस टू टू मेक यू मोर कंफर्टेबल विद द आइडिया ऑफ अ कंसेप्ट। एंड इसके बाद अब आप क्वेश्चंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशंस के प्रैक्टिस के जो असाइनमेंट्स है वो कर सकते हो, और डेफिनेटली ये आपको कंसेप्ट बहुत बहुत हेल्पफुल करेगा। थैंक यू।